आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 8 समर मेकअप ट्रेंड्स एंड आइडियाज टू ट्राई इन 2022। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें फर्स्ट 4 लुक्स मैं शेयर करूँगी। हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं मीनल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो सबसे पहला मेकअप ट्रेंड है फ्रेश स्किन मेकअप ट्रेंड। इसको आप नेचुरल मेकअप लुक भी कह सकते हैं। स्पेसिफिकली आफ्टर आलिया भट्ट स्पोर्टेड दिस फॉर हर वेडिंग। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। नाउ बेस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहली चीज़ जो आप लगाएंगे इस लुक के लिए वो है ब्लश। ब्लश कभी भी आप अपवर्ड मोशन में लगाएंगे तो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। Also apply it on your nose to give it a symmetrical look. Now you can take the same blush and apply it on your eyelids as well. Now here I'm taking this palette by Makeup Revolution and choosing this very beautiful champagne color. You can take any kind of very light shimmery color whatsoever is available with you and apply it all over your lids. मेन पार्ट है कि आपको इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से लगाना है। बहुत अच्छा पॉप और शिमरी लुक देगा ये। Also apply it on the bridge of your nose, on your cupid's bow and also on your cheekbones. इस लुक का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट ही हाइलाइटर है to give you that glowy dewy look. Now I'm taking this a very natural nude, almost matching to my lip color lip liner. I'm gonna line my lips with it. Now here I'm going with my current favorite, very natural and nude lip color by Lakme. The color would be in the description box. I have recently also shared my top favorite nude lip colors under rupees 300. If you have not seen that video, the link would pop on the screen. Please check it out. Now I am using this mascara by Lash Princess. It is one of the best mascaras that I have used. This is by Essence. Now as this look is very natural, we don't want to use false eyelashes. I'm also using this eyebrow wax to give my eyebrows a very natural look. And here our first makeup look is complete. So easy, so simple, yet so nice and elegant. This brings us to our second trending look, which is fluffy brows for summer 2022. Oh my god, I have been obsessed with this look. It is very simple to achieve. All you have to do is go with a very light brownish color on your lids as I am doing. आउटर कॉर्नर के लिए थोड़ा सा डार्क ब्राउनर कलर लीजिए और एक वी बना के उसको बहुत अच्छे से आईलिड्स पे ब्लेंड कर लीजिए. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव अ ब्राउन टिंच to your eyelids for this look. I'm also using my fingers to blend any harsh lines. For this look, I'm also using a very natural, one of my favorite lip colors, which is Nude Nuance by Maybelline, one of the best nude lipsticks. Basically, you have to have like a very light brownish effect for this look. For the highlight of this look, here I'm using brow wax. यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है. इसको आप किसी भी स्प्रे से, here I'm using rose water, अच्छे से वेट कर लीजिए. use the spatula which comes with the box. Take ample amount of the wax and just try and apply it in an upward motion. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से स्पैचुला से सारे हेयर को upward motion में कर रही हूँ. इसके साथ साथ what you have to do once you are done with that, also lightly press with your finger. तो ये क्या होता है ना, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है. सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू. वंस यू डन विद दैट, ऑल यू हैव टू डू शेप योर आईब्रो विद इट. थोड़े से जो आपको दिख रहे हैं कि ऊपर हेयर आ रहे हैं वो एक आप अच्छे से शेप में कर लीजिए. For this look, I'm also using bronzer. This one is by Color Essence. बहुत ज़्यादा चिज़ल लुक के लिए नहीं, बट हल्के से इफ़ेक्ट के लिए. Always remember that you have to blend your bronzer in an upward motion. That is all for our second trend, which I am in love with. On to our third trend to try this summer is Summery Pastel Eyeshadow 2022. सबसे पहले इसके लिए हम concealer लेंगे. The concealer that I'm using here is by Insight. It is a wonderful concealer. I'm also concealing my lips here. अच्छे से आप concealer लगा लीजिए and with the help of your fingers अच्छे से blend कर लीजिए. Usually जब आप light eyeshadow लगाते हैं तो concealer का part बहुत ज़्यादा important है, नहीं तो eyeshadow दिखेगा नहीं आपके lids पे. To start off, I'm taking a very nice pinkish peach color और मैं अपने outer lids पे ये लगाना start करती हूँ. Now for the next color, the palette that I'm using is by You Can Be, which is so beautiful. Now for this look, you can take
any pastel color, lilac, light pink, light purple, any color that you want. Here I'm taking a very pinkish purplish color and just apply it on your outer corners. Make sure कि आप थोड़ा सा inner corner of your eye में भी लगाएं ताकि वो थोड़ा सा pop out दिखे. बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ऐसे. नेक्स्ट आई एम गोइंग अहेड विद द सेम पीच आई शेडो, और जो भी थोड़ा सा जगह बचा है वो मैं वापस से फिल कर लूँगी और अच्छे से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. आई एम ऑल्सो गोना अप्लाई इट ऑन माई लोअर लैश लाइन, द सेम पीच कलर जो आपने ऊपर के लिप्स पे कलर करा है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मल्टीपॉट लिप चीक एंड आई कलर बाय लव अर्थ. आई एम यूजिंग माई फिंगर्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इट टू बी वेरी prominent. It's a very nice peachish pink color, and just apply it all over your lids. That's it, and I feel you should definitely try this one for the summers. This brings us to our fourth makeup look, which is my favorite, and I am obsessed with this. So the first thing that we are doing is applying a lip liner, which is very natural and very matching to my own lip color, and I'm going with a lip gloss. Now this is a lip plumper lip gloss. It is by Essence, hence I'm applying it before my makeup look. नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड एंड कंसीलिंग माई आईलिड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई भी लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं तो आईलिड्स का कंसील होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी लाइट कलर दिखेगा नहीं. आई लव टू यूज़ माई फिंगर्स टू ब्लेंड द कंसीलर. So we are starting off with a very nice yellow color, which is so appropriate for the summers. I'm gonna apply it all over my lids very nicely. Now for the outer corners of my lids, I'm going to be using this very nice orange color, and I'm going to do my outer lids with it, make a V and blend it very nicely so it will look very gradient from yellow to orange. Now a very nice tip, take any brush and spray setting spray on it, and take your eyeshadow, any color eyeshadow, and apply it as a liner. It practically works. I am using a eyeshadow as a liner right here, and you should try it too. I'm using a very nice bright pink color. Outer corners को मत भूलिएगा. यहाँ पे मैं ब्लैक आईलाइनर भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग फेक लैशेस, सो एक बहुत प्यारा लुक देगा वो. That's the fourth look. I hope you have liked it. I am super obsessed with it. The remaining 4 looks will come on Sunday, so make sure you subscribe and click on the notification bell. If you have liked this video, I will see you in my next video. Till then, be you, be beautiful.